नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान। यूपीएससी फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर। लास्ट जो 9 इयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल एनालिसिस होगा। पिछले वाला जो वीडियो था वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के ऊपर था और एंशिएंट मेडिएवल का भी जो वीडियो था वो भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग जीएस पेपर एंड रिगार्डिंग प्रीलिम्स। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वीडियो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर लास्ट 9 इयर्स क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग विथ एमसीक्यू प्रीलिम्स का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो 2010 का क्वेश्चन। 2010 में पहला क्वेश्चन था कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी which of the above provision of the constitution of India is or are fulfilled by national social association program launched by government of India। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 3 only, that is the 3 only, that means option B is the right answer। so ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों पॉइंट सही है। ओके चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। So first point, on its own initiative on any matter of large public interest. Second, if he seek such as an advice. Third, only if the matters related to the fundamental right of citizen। ये था दूसरा वाला ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, दैट इज 2 only, that is 2 only। if he seek such an advice, this is the right answer। पिछला वाला था सिर्फ 3 only, that is the directive principle of state policy which ये वाला सही आंसर था और इधर ये वाला सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द instrument of instruction, just hold on, the instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year of 1950 as is the right answer is that directive principle of state policy, directive principle of the state policy, that is the option B, directive principle of the state policy। okay, next question, which of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament? So right answer option B, Department of Economic Affairs, Department of Economic Affairs, Department of Economic Affairs, Department of Economic Affairs। Next question, with reference to the consumer dispute redressal at district level in India, which one of the following statement is not correct? So इन तीनों से कौन सा statement correct नहीं है? वो है option C, the district forum entertains the complaint where the value of goods or service does not exceed rupees 50 lakh। so this is the right answer। so next question, who of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of parliament? so the right answer is option A, the president of India, the president of India, this is the right answer, option A। next question, which one of the following authority makes
recommendation to the governor of a state as to the principles for determining the taxes and the duty which may be appropriate by the panchayat in the particular state. So the right answer is that option B, State Finance Commission. Right answer is State Finance Commission. Okay, so next question is that, just hold on. Okay. So next question is that, consider the following statement. In India, a metropolitan planning committee one is constituted under the provisions of the Constitution of India. Second, prepares the draft development plans for metropolitan area. Third, has the sole responsibility for implementing government sponsored scheme in the metropolitan area. So right answer is that option A, that is 1 and 2 only. That is 1 and 2 only. ये वाला सही आंसर है, 1 and 2 only. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. What is the difference between vote on account and interim budget? So इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 2 only. That is 2 only. And the second point is that vote on account only deals with the expenditure in government budget, while an interim budget include both expenditure and receipt. So this is the right answer. That is option B, only 2. Okay, the next question is that the Constitution 73rd Amendment Act 1992, which aim at promoting the Panchayati Raj institution in the country, provides for which of the following? The right answer is that option C. The right answer is that option C. That is 2 and 3 only. So 2 नंबर पॉइंट में क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस. थर्ड नंबर पॉइंट में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन. ये दोनों पॉइंट सही है. So these 2 points are valid. So the valid answer is that option B, 2 and 3. So next question, consider the following. Right to education, first point. Second, right to equal access to public service. Third, right to food. So which of the above is or are human right or human rights under Universal Declaration of Human Rights? So the right answer is that option D, 1, 2 and 3. That is ये तीनों पॉइंट सही है. ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों पॉइंट सही है. Okay, so next question. In India, if a religious sect or community is given the status of a national minority, what special advantage it is entitled to? That is option C, that is 1 and 3 only. Option C, that is 1 and 3 only. So first point क्या है? It can established and administrator exclusive educational institute. And थर्ड पॉइंट जो है ये पहला वाला पॉइंट, और थर्ड पॉइंट जो है वो है इट कैन डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम. ओके, so these points are right statement. So the correct answer is that option C, 1 and 3 only. So the next question, India is home to lakh of a person with disability. What are the benefits available to them under the law? So the right answer is that option D, 1, 2 and 3. So this is the right answer. So that ये तीनों पॉइंट क्या है? ऑप्शन पॉइंट नंबर 1, फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 years in government run schools. Second point, preferential allotment of land for setting up a business. And the 3 ramps in public building. Oh, ये तीनों पॉइंट सही पॉइंट है. So the right answer option D. Okay, next question.
The authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from option B, the Parliament of India. The Parliament of India. The Parliament of India. So this is the right answer. Next question. All revenue received by the union government by way of taxes and other received for the conducts of government business are credited to the option C, Consolidate Fund of India. Consolidate Fund of India. So this is the right answer. Consolidate Fund of India. Next question. When the annual budget is not passed by the Lok Sabha, that is the last option, option D, the Prime Minister submit the resignation of Council of Minister. Council of Minister. This is the right answer. Next question. Under the Constitution of India, which one of the following is not fundamental duty? That is option A, to vote in public election. To vote in public election. To vote in public election. So this is the right answer. Next question. With reference to the Finance Commission of India, which of the following statements are correct? That is option D, none of the statements A, B, C given above is correct in his context. ये तीनों जो point है तीनों गलत है. So the right statement is that option D. Okay. So next अभी आता है कि ये 2011 का क्वेश्चन हो गया. अभी आया 2012. चलिए 2012 में देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है. 2012 का क्वेश्चन है, इन इंडिया अदर देन ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of the CAG? So इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3 ओनली. 2 नंबर पॉइंट में क्या बोला है? कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्री आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. थर्ड पॉइंट में है, इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायोलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंस. ये दोनों पॉइंट सही है. तो आप लोगों को शायद ये जो कैग क्या है, पॉलिसी क्या है, मतलब जो बेसिक जो चीज़ होता है, जो सब कुछ पॉलिटी में आप लोगों को थोड़ा नया लगेगा, क्योंकि मैं अभी तक उसका हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया हूँ. तो नेक्स्ट वीडियो से मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 6 से. उसके बाद मैं ऐसी पॉलिटी, जियोग्राफी सब सब्जेक्ट एक एक करके स्टार्ट करूँगा. तो आप लोग थोड़ा चैनल के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा डेली टू डेली वीडियो को थोड़ा वॉच कीजिए. आप लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल जो मतलब जो एनसीईआरटी का जो पॉलिटी है और जो रमेश सिंह का जो पॉलिटी है, उसका मैं अच्छे से आप लोगों को मतलब एक समराइज्ड आइडिया दूंगा. तो तब ये क्वेश्चन भी मैं फिर से मैं एक बार डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, तब आप लोगों को ये क्लियर लगेगा. तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये मैंने बोल ही दिया था कि ये ऑप्शन सी है, 2 and 3. सो दिस इज ऑप्शन सी, 2 and 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट. जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, that is need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must become a member of one of the house within 6 months. तो जो पार्लियामेंट का दोनों हाउस होता है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ये दोनों हाउस की बात कर रहे हैं. तो ये जो पॉइंट है ये सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द डेलिमिनेशंस कमीशन consider the following statement. So the right answer is option C, both 1 and 2. Both 1 and 2. This is the right answer. 1 and 2 दोनों both है, दोनों सही आंसर है. तो क्या है, 1 पॉइंट में है, the orders of the delimitation commissions cannot be challenged in a court of law. Second, when the order of the
delimitations commissions are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly, they cannot effect any modifications in the orders. ये दोनों पॉइंट सही है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है एंड ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है दोनों सही है, दैट इज द ऑप्शन सी. Next question. According to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following? That is option C. That is option C. 1, 3 and 4 only. 1, 3 and 4 only. So this is the right answer. 1 में क्या बोला है? The recommendation of the Union Finance Commission. 3 थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. एंड फोर्थ में क्या बोला है? द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द स्केड्यूल कास्ट. ओके, ये तीनों पॉइंट सही है. एंड द राइट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Deadlock between the Lok Sabha and Rajya Sabha calls a joint sitting of the Parliament during the passage of. That is the option A. That is the option A. That is one only. That is ordinary legislation. Ordinary legislation. ये वाला सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है how to district rural development agency DRDAs help the reduction of rural poverty in India. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 and 4 only. That is 3 and 4 only. थर्ड पॉइंट में क्या है? DRDA secure intersectoral and interdepartmental coordinations and cooperations for effective implementation of anti-poverty program. And fourth point में क्या बोला है? DRDA watch over and ensure effective utilizations of the funds intended of anti-poverty program. ये दोनों पॉइंट सही है. ओके, मैं एक्चुअली सही आंसर के बाद फिर से एक बार बोल देता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम भी होगा तो वो मेरा जो ऑडियो है उससे उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये लाइन क्या बोल रही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. Which of the following is or are among the fundamental duties of citizen laid down in the Indian Constitution? That is the right answer is option C 1, 3 and 4 only. That is the option C 1, 3 and 4 only. So एक नंबर पॉइंट में क्या है? the preserve the rich heritage of our composite culture. थर्ड पॉइंट में to develop the scientific temper and the spirit of inquiry. Fourth, the strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. सो ये तीनों पॉइंट सही है, ये सही नहीं है. चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. दैट इज ऑप्शन ए. दैट इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली. एक नंबर पॉइंट में क्या है? व्हाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड थर्ड पॉइंट में क्या है? द सैलरी ऑफ जज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू व्हिच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट. ये दोनों सही है, एक नंबर पॉइंट और थर्ड पॉइंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. इन द एरिया कवर्ड अंडर द पंचायत extension to the schedule area act 1996, what is the role or power of gram sabha? That is option B. Option B is the right answer 1 and 2 only. एक नंबर पॉइंट में क्या बोला है? ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट अलाइटेशंस ऑफ लैंड इन द शेड्यूल एरिया. एंड सेकेंड पॉइंट में बोला है कि ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ये दोनों आंसर सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं.
In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is, इसका जो सही आंसर है, to allow discussions on a definite matter of urgent public importance. ये सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India? That is the option A, one only. एक नंबर पॉइंट में क्या बोला है कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. आप लोगों को बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके ऊपर मैं डिटेल में जो नेक्स्ट में क्लास होगा आस्ते आस्ते मैं हमारा जो बेसिक पोर्शन की बात मैं हर एक आर्टिकल के ऊपर जो यूपीएससी का रिलेवेंट है उसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा. तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. कंसीडर द फॉलोइंग provisions under the directive principle of state policy as inherent in the Constitution of India. So the right answer is 1, 2, 3, 4. That means ये चारों पॉइंट सही है. तो पहला वाला पॉइंट क्या है? सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनियन सिविल कोड. सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत. थर्ड, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज. फोर्थ, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेज्योर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी. ये चारों पॉइंट सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसका जो सही आंसर है वो होगा नन, मतलब नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये स्टेटमेंट्स क्या था इधर? एक नंबर स्टेटमेंट था यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा. सेकंड, इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शंस कमिश्नर to adjusted the election dispute. Third, according to the Constitution of India, Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha only. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. विद रेफरेंस टू कंज्यूमर राइट्स और प्रिविलेजेस अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली. एक नंबर पॉइंट में क्या बोला? कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स और फूड टेस्टिंग. एंड थर्ड नंबर जो पॉइंट है उधर है in case of death of consumer his or her legal here can file a complaint in the consumer forum on his or her behalf. ये दोनों सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. थर्ड ओनली. थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? इफ ही और सी इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज और हर रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस्ड टू द डेप्यूटी स्पीकर. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. Which one of the following are included in the original jurisdictions of the Supreme Court? That is option C 1 and 4. एक नंबर पॉइंट में क्या बोला है? डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स. चार नंबर पॉइंट में क्या बोला है? डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स. ये दोनों सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? So right answer is that option B, to pass a resolution empowering the Parliament to make law in the state list and to create one or more all India services. So this is the right point. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? Which of the following are the method of parliamentary control over public finance in India? पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. इसका जो सही आंसर होगा ये होगा जो चारों पॉइंट आप लोगों को इधर बता है ये सही है. तो चलिए नेक्स्ट जो मैं पहला वाला पोर्शन बोल देता हूँ. पहला पॉइंट था प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट. सेकंड पॉइंट withdrawal of money from consolidated fund of India only after passing appointment bill.
हार्ड पॉइंट में क्या बोला है, provisions of supplementary grants and vote on account. Fourth point, a periodic or at least a mid-year review of a program of the government against macroeconomic forecast and expenditure by a parliamentary budget office. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला है, फिफ्थ पॉइंट में है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट. सो राइट आंसर ऑप्शन डी 1 2 3 4, चारों पॉइंट सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. Which of the following provisions of the Constitution of India have a bearing on education? So the right answer is that the Lok Sabha, sorry, the right answer is that 1 2 and 5 only, that is ऑप्शन सी. एक नंबर पॉइंट में क्या बोला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सेकेंड पॉइंट रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी. एंड फिफ्थ पॉइंट सेवेंथ शेड्यूल. ओके, ये तीनों पॉइंट सही है, 1 2 और 5. चलिए आप आते हैं 2013 का क्वेश्चन जो है. 2013 का क्वेश्चन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है what will follow if a money bill is substantially amendment by the Rajya Sabha. इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, the Lok Sabha may still proceed with the bill accepting or not accepting recommendation of the Rajya Sabha. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, which one of the following statements is correct? that is ऑप्शन सी. इधर जो ऑप्शन सी है ये सही आंसर है. No procedure has been laid down in the constitutions of India for the removal of a governor from his or her post. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, वो है, जस्ट होल्ड ऑन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसका जो सही आंसर है नाइदर वन नॉट टू, दैट मीन्स ये वाला सही आंसर है. ना ये एक नंबर पॉइंट सही है ना 2 नंबर पॉइंट सही है. सो ये दोनों गलत स्टेटमेंट है, ये सही आंसर है. दैट इज पॉइंट, दैट इज ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Again consider the following statements. That is Attorney General of India can. Option C. एक मिनट. हाँ, अब देखिए जो क्वेश्चन है अटोनॉमी जनरल ऑफ इंडिया कैन, दैट इज ऑप्शन सी 1 2 and 3. एक नंबर पॉइंट में क्या बोला है, टेक पार्ट इन द proceeding of Lok Sabha, speak in the Lok Sabha, that is the third point. And second point is that be a member of committee of the Lok Sabha. So the right option is that option C 1 2 and 3 are right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, the parliamentary which of the following body does not or do not find mention in the constitution? That is option D 1 2 and 3. National Development Councils, second Planning Commissions, third Zonal Council. ये तीनों सही आंसर है, that is option D. Next question, the parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaty. So the right answer is option D, without the consent of any state. Okay, चलिए next question है, the government enacted the Panchayat extension of scheduled area, that is PESA, Panchayat extension of scheduled area, PESA, in Act in 1996. Which one of the following is not identified as its objective? That is option C,
to create autonomous religious tribal area. Okay, next question. Under the scheduled tribe and other traditional forest dwellers, that is recognitions of forest right act 2006, who shall be the authority of initiative the process of determining the nature and extent of individual or community forest right or both. That is option D, ग्राम सभा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. इकोनॉमिक जस्टिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द constitution has been provided in, that is the right answer is option B, the preamble and the directive principle of state policy. This is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. According to the Constitution of India, just hold on. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? That is directive principle of state policy. Directive principle of the state policy. Next question, consider the following statements. जो सही आंसर है that is 2 and 3. That is second जो statement ये सही आंसर है, that is the सेकेंड जो ऑप्शन ओ है, ऑप्शन ओ है जे सेक्युलराइज अपॉइंटमेंट्स फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड थर्ड ऑप्शन है ऑफ द ऑडिटर एग्जामिन्स द रिपोर्ट कंप्ट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया. ये दोनों सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज द नॉट इम्प्लाई institutionally in the parliamentary government? The right answer is 1 and 2 only. एक नंबर पॉइंट में क्या बोला है? members of the cabinet are members of the parliament, and the second point is that ministries hold the office till they enjoy confidence in the parliament. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 and 3. क्या बोला है ऑप्शन 2 में? द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड the office during the pleasure of the president of India. And the third is that the prime minister shall communicate to the president about the proposal of legislation. ये दोनों सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इधर का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली. दैट इज 2 and 3. क्या बोला है? टू सेकेंड पॉइंट में द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द concurrent list in the Constitution of India. And the third option is that the Constitution of India prescribe that panchayat should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. ये दोनों पॉइंट सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन. इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 2 only. With the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the president election. They have the right to vote in the election of the vice president. ये वाला सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उधर आते हैं हम लोग. विद रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दैट इज बोथ 1 and 2. दिस इज द राइट आंसर. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. एक पहला वाला स्टेटमेंट है इट्स ऑब्जेक्टिव इट इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपेटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. सेकंड, इट इशू गाइडलाइन फॉर द स्टेट लीगल service authority to implement the legal programs and scheme throughout the country. ये दोनों पॉइंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following constitute the National Development Council? That is option B, 1, 3 and 4 only. एक नंबर पॉइंट द प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन कैबिनेट. फोर्थ, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. ये तीनों सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ये 2014, अब ये 2013 होगा, अब 2014 का बारी. चलिए 2014 का क्वेश्चन क्या है?
which one of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding anti-defection? That is the option D, that is 10th schedule. Okay, चलिए next question. In the Constitution of India, promotion of international peace and security is included in the, that is option B, directive principle of state policy. Directive principle of the state policy. This is the right answer. चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन है, which of the following are associated with planning of India? Planning in India, that is the right answer is that ऑप्शन सी 2 and 5. तो सेकेंड वाला ऑप्शन बोल देता हूँ क्या है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. चलिए उसके बाद जो 5 वाला ऑप्शन है वो देखते हैं क्या है. 5 वाला जो ऑप्शन है वो है द पार्लियामेंट. 5 वाला जो ऑप्शन है वो है पार्लियामेंट. सो द राइट आंसर इज दैट ऑप्शन सी 2 and 5 only. This is the right answer. Next question, which of the following is or are the function of the cabinet secretary? That is option C 1 and 2 only. One पहला वाला statement, that is the preparations of agenda of cabinet meeting, and the second is the secretarial assistant of cabinet committee. ये दोनों statement सही है. Next question, consider the following statements. A constitutional government in one which, that is number जो 2 नंबर का जो स्टेटमेंट है ये सही है, that is option B is correct. Places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. Next question में आता है, which of the following are the discretionary power given the governor of a state? So the right answer is that option B 1 and 3 only. एक नंबर पॉइंट में क्या बोला है, sending a report to the president of India for imposing the president's rule, and the third, reserving certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president of India. ये दोनों सही स्टेटमेंट है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, दैट इज ओनली 1. क्या बोला है एक नंबर स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्री ऑफ द सेट बिजनेस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement regarding a non confidence motion in India. इसका जो सही आंसर है ये both 1 and 2, ये दोनों सही स्टेटमेंट है. पहला वाला स्टेटमेंट, there is no mention of a no confidence motion in the Constitution of India. Second, a motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. Second question, the power of increase the number of judge in the Supreme Court of India is vested in, that is the option B, the Parliament. That is the option B, that is the Parliament. Next question, the power of Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state falls under its, that is the option C, original jurisdiction. Original jurisdiction is the right answer. Next question, which one of the following is the largest committee of the parliament? That is option B, the committee of estimate. The committee of estimate. चलिए 2015 का जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. The provision is the 5th schedule and 6th schedule in the Constitution of India are made in order to, that is option A, protect the interest of scheduled tribe. Next question, with reference to the union government, consider the following statement. That is option C, only 2. 2 नंबर वाला स्टेटमेंट सही है. No amount can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization of Parliament of India. Next question, who or which of the following is the custodian of the Constitution of India? That is Supreme Court of India. That is Supreme Court of India. That is option D. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. Consider the following statement.
नाइदर वन नॉट टू, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या क्या बोला है? एक नंबर स्टेटमेंट, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सेकंड, द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब ये दोनों गलत है, ये दो स्टेटमेंट। सो राइट आंसर इज नाइदर वन नॉट टू। So the next question, to uphold and protect the sovereign unity and integrity of India is the provision made in the fundamental duty. That is option D. Next question, the fundamental object of Panchayati Raj system to ensure which among the following? That is option C, 1 and 3 only. Pupils' participation in development and third democratic decentralizations, ये दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनहेरेंट इन इट्स, दैट इज ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। So the next question is that there is a parliamentary system of government in India because the last option, that is option D, Council of Ministry is responsible to the Lok Sabha. So this is the right answer, that is option D. Next question, consider the following statement regarding the DPSP or directive principle of state policy. Okay, so the right answer is that option C, both 1 and 2. So एक नंबर ओपिनियन में क्या बोला है, एक नंबर स्टेटमेंट पर, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एंड द सेकंड is that the provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Okay, so the next question, consider the following statement, the Rajya Sabha has no power either to reject or the amend money bill. ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही आंसर है। उसके बाद दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट, ये दोनों सही आंसर है, इसलिए सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, 1 and 2 only. Next question, when a bill is referred to a joint sitting, both the house of the parliament has to be passed by option A, that is a simple majority of member present and voting. This is the right answer. Next question, consider the following statement, ये दोनों जो है ऑप्शन डी जो है नाइदर वन नॉट टू, मतलब ये वाला सही ऑप्शन है, ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। क्या बोला है? एक नंबर स्टेटमेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। चलिए अब 2016 का जो पेपर है उसके ऊपर थोड़ा हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the with reference to the Gram Nalayo Act, of the which of the following statements is or are correct? That is option B, 2 only. The act allowed local social activity as meditators and reconciliators. ये जो second option है, that is option B, that opinion, that statement 2 is correct. Next question, the Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest of resolution to that effort is passed by the last, that is the option D, Rajya Sabha by a majority of not less than 2/3 of its members present and voting. So next question, the consider the following statement, that is option B is the right statement, right options, and the statement is that option 2, a panchayat reconstituted after the pre-amateur dissolutions continue only for the remained period. Okay, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो चलिए देखते हैं। ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोग्रेशंस, ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट है क्या, सेकंड जो स्टेटमेंट है, अ बिल pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolutions of the Lok Sabha। ये वाला सही आंसर है। So the right option is that option B। Okay, next question, consider the following statement that is neither one not two। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट ये सही है, that is one is not appropriate statement and also second is not appropriate। क्या बोला है वन एक नंबर स्टेटमेंट पर, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। सेकंड, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। सो ये दोनों गलत है, सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू। चलिए आते हैं 2017 का जो पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रीलिम्स। Democracy support virtue lies in the fact that it calls into, पहला वाला ऑप्शन सही है, the intelligence and character of ordinary men and women। सेकंड क्वेश्चन में आता है which of the following statements is or are true of the fundamental duty of an Indian citizen। that is option C, both 1 and 2। ये एक और दो, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटी। सेकंड, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटी। ओके, सो बोथ 1 and 2 is correct। So the next question is that with reference to the Parliament of India, consider the following statement, that is neither one not two। this is the right statement। ये जो है ये दोनों गलत है। क्या बोला है पहला वाला स्टेटमेंट, द प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, recently a private members bill has been passed in the parliament of India for the first time in its history। ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which principle among the following was added to directive principle of state policy by the 42 second council amendment to the constitution। that is option B, parliament participations of workers in the management of industry। ये वाला राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, which one of the following statement is correct। the correct statement is option C, rights are claim of the citizen against the state। okay, next question, local self government can be best explained as an exercise in, that is option B, democratic decentralizations। okay, this is the right answer। next question, consider the following statement, with reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constituted limitations upon, that is option D, neither one not two। ये जो पहला वाला स्टेटमेंट ये गलत है, लेजिस्लेटिव फंक्शन, सेकंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये दोनों गलत है। so the right answer option D। next question, which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India। that is option B, economic liberty। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, one of the implications of equality in society is the absence of privileges। that is option A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट is that is option C, the executive remain responsible to the legislature। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in the context of India which one of the following is the correct relationship between right and duty। that is right and duty के लिए ये चारों स्टेटमेंट से कौन सा राइट है, कौन सा सही स्टेटमेंट है, that is option A, right are correlative with duty। this is the right point or right opinion। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द प्रीएम्बल. This is the right answer. Next question. The parliamentary of India exercise control over the functions of the Council of Ministry through, that is option D, 1, 2 and 3 only. That's adjournment motions, question hour, second, third, supplementary question. ये तीनों सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, दैट इज ऑप्शन सी, एनी citizen of India whose name appears the electoral roll in the constituency. This is the right answer. Next question. Right to vote and to be elected in India is a legal right. दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. मैं एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्किप हो गया, मैं बोल देता हूँ. राइट टू वोट और टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ लीगल राइट. और उसका जो पीछे वाला क्वेश्चन था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका सही आंसर है नाइदर 1 नॉर 2. ये वाला सही आंसर है, दैट इज ये दोनों स्टेटमेंट गलत है. क्या बोला था, एक पहला वाला स्टेटमेंट था, इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 50% ऑफ द votes polled to be declared elected. Second, according to the provision laid down in the Constitution of India in Lok Sabha, the speaker's post goes to the majority party and the deputy speakers to the opposition. चलिए, तो the right answer is that option D, neither 1 nor 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन 3, दैट इज ऑप्शन 3. just hold on. ये वाला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन डी. ओके, दैट इज ऑप्शन डी. ये वाला स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन डी में क्या बोला है, थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज इलेक्शन कमीशंस रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट और मर्ज ऑफ रिकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू imply, that is the option A, the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of law and executive orders. This is the right answer. Next question. Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president's rule in state? So the right answer is 1 and 3 only. Dissolution of the state legislative assembly, and third, dissolution of the local body. Okay. Next, which one of the following are envisaged by the right against exploitations of the Constitution of India? That is option C, 1 and 4 only. Option C, that is 1 and 4 only. पहला वाला point, prohibitions of traffic in human beings and forced labor, and fourth is prohibitions of employment of children in factory and mines. Okay, so the next question, out of the following statement choose one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. That is right statement, option C, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government of the people. Next question, which one of the following is not a feature of Indian federalism? That is option D, it is the result of an agreement among the federating units. चलिए, ये तो हो गया 2000 अब लोगों का 2000, ये था 17 का क्वेश्चन. अब 2018 में आते हैं हम लोग. 2018 में देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 2 ओनली. In the Lok Sabha, leader of the opposition was recognized in the first time in 1969. This is the right statement.
that is option B is the right answer. So next question, consider the following statement, that is option A only, that is one only. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. So the second question is that, with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committee which of the parliamentary committees recognized and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules by law, etc., conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such a delegation. So the right option is that option B, Committee of Subordinate Legislation. This is the right answer. ये क्वेश्चन ज़्यादा ही लंबा है क्वेश्चन. सो ये ऐसा टाइप जब क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ना, क्योंकि बहुत कुछ छोटा छोटा पॉइंट हम लोगों से मिस हो जाता है, तो इसके लिए जो गलत ऑप्शन है वो हम लोग चूज कर देते हैं. तो इधर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिगार्डिंग मनी बिल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, that is option C. Money bill is concerned with the appropriations of money out of the contingency fund of India. So this is the right options, that is option C, and this is not a relevant statement regarding money bill. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन ए, वन ओनली. क्या बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज अगेन ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. क्या बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और सी ceases to be a member of the assembly. Okay. So this is the right statement, that is one only, and option A is the right answer. Next question is that which one of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty, that is the option B, if there are no law there is no liberty. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 इज द राइट स्टेटमेंट. पहला वाला स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल proceedings shall be instituted against the governor of state in any court during his term of office. Second, the emoluments and allowance of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. So ये दोनों पॉइंट सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following are regarded as the main features of the rule of law, that is 1, 2 and 4, option C is the right. Limitation of power, second options equality before law, and 4 that is liberty and civil rights. ये तीनों सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन ऑप्शन बी, द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, राइट टू प्राइवेसी. राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन intrinsic part of the right to life and personal liberty. Which of the following in the constitutions of India correctly and appropriately imply the above statement, that is option C, article 21 and the freedom granted part of 3. This is the right answer. तो ये था 2018 का क्वेश्चन. अब आता है 2019 का जो क्वेश्चन है, चलिए हम लोग वो भी एक बार देख लेते हैं. जस्ट होल्ड ऑन.
चलिए 2019 का क्वेश्चन, ये वाला 2019 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं इधर टेक्स्ट भी कर देता हूँ एक बार। इसका जो जस्ट होल्ड ऑन, इसका जो थोड़ा सेटिंग्स है नहीं, ऐसा तो कुछ सेटिंग्स अभी तक नहीं मिला है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी लिख देता हूँ। ये 2019 का पेपर है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज वन जो है ये वाला सही आंसर है। स्टेटमेंट वन में क्या बोला था, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया introduced an article placing the election of the prime minister beyond judicial review. This is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 3 and 4 ओनली। दिस इज द राइट आंसर। थर्ड और फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जज that the Judge Inquiry Act, that is 1968, and fourth जो point है that is if the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total members of that house present and voting. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the ninth schedule was introduced in the constitution of India during prime ministership of, that is Indira Gandhi. This is the right answer, option C. Next question, consider the following statement again, that is option A, 1 and 2 only. ये वाला स्टेटमेंट सही है। पहला वाला स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस एक्ट 1959 एक्सपेंड्स several posts from disqualifications on the ground of office of profit, and the second point is that the above mentioned act was amendment 5 times. ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड द राइट आंसर इज दैट ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द स्केड्यूल, under which schedule of the Constitution of India can transfer of tribal land to private party for the mining be declared null and void? That is third schedule. This is the right answer. So the next question, in the context of polity, which one of the following would be accept as the most appropriate definition of liberty? ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफ टाइनरी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। दिस इज द राइट आंसर। और इसका पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो था विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन 2। क्या बोला है ऑप्शन 2 में, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर इज दैट ऑप्शन बी, एंड द राइट स्टेटमेंट ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया। अब चाहते हैं उसका बाद जो क्वेश्चन है 25th का, वो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन अमेंडमेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ detached figure without intense political links or should not have taken part of the politics in the recent past. चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इधर पूरा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, recent past, and the right answer is that option C.
सरकारी कमीशन, दैट इज 1983। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन इंडिया which of the following review the independent regulations in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. So that is option C, 3, 4, 5 is the right answer. Third, finance commissions. 4, finance sector legislative reform commissions and नीति आयोग। फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। ये थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, provisions of or limitations of provisions contained in ordinary law cannot act as the provisions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following statement? The right statement is option C. In the event of grave financial crisis in the country, the President of India can declare financial emergency without the counsel from the cabinet. So next question is that with reference to the Legislative Assembly of a State of India, consider the following statement is right. That is option 2. That is option B. When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on the matter. That is the statement 2 is the right answer, and the right answer is that option B. And the next question is that which article of the Constitution of India safeguard one's right to many persons of one's choice? That is Article 21. This is the right answer. That is the Article 21, and the right answer is that option B. तो यही था 2019 का पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स का। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में मैं जो 2010 टू 2019 ये 9 साल का जो प्रीलिम्स का यूपीएससी का जो क्वेश्चन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो ऊपर वो पूरा मैंने बताया, एक डिटेल एक एनालिसिस भी किया हूँ। और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एनसीईआरटी से स्टार्ट होगा, हिस्ट्री का वो क्लास का 6 का जो एनसीईआरटी है हर एक सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर ऐसे ही हम लोग वीडियो तैयार करेंगे। तो पॉलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों का शायद अभी क्वेरी चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी है वो पता नहीं है। मैं हर एक टर्म टर्मिनोलॉजी डिटेल में एनालिसिस करूंगा, उसकी रिगार्डिंग मैं इस क्वेश्चन को भी तब मैं डिटेल में फिर से रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों आपका वीडियो अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ जो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जिसके पास उतना ज़्यादा मतलब वो फिनेंशियल स्ट्रांग नहीं है उसको जल्द से जल्द ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप लोगों का जो फ्रेंड है फैमिली है सबको शेयर कर दीजिए, और ज़रूर लाइक करना। अगर कुछ गलतियां होते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन पर लिखना, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, हो सकता है कुछ चूक मुझे भी हुआ है मेरे तरफ से। तो ज़रूर कमेंट पे लिखना। अगर कुछ नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है तो डेफिनेटली यूट्यूब का कमेंट सेक्शन पर लिखना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो ज़रूर यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उधर कमेंट करना, और जो हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है UPSC for _all ज़रूर इधर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ये फ्री है। इधर आप लोगों को डेली टू डेली अपडेट मिलेगा, और डेली टू डेली आप हमारा जो चैनल है UPSC for all इसको थोड़ा फॉलो कीजिए। मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा नेक्स्ट क्लासेस से मैं स्टार्ट करूँगा एनसीईआरटी। तो सबसे पहला होगा हिस्ट्री का क्लास 6, पार्ट वाइज में डिटेल एनालिसिस करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हद तक आप लोगों को हेल्पफुल हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज UPSC for all एंड शेयर माय वीडियो। जो लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा तो आप लोगों का जो फ्रेंड है दोस्त है उन लोगों को ये ज़रूर शेयर कीजिए। और एक्चुअली मेरा जो मेन मोटो है कि एक फ्री में एजुकेशन देना। बहुत ही मतलब टैलेंटेड जो स्टूडेंट होता है उनके पास उतना इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग नहीं होते, तो मेरा एक ही मकसद है कि थ्रू माय चैनल वो लोग अच्छे से सीख पाए। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।